Everyone. Let's wait for a couple of minutes. अभी कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाए जिस समय करण ने बताया इट विल टेक अनदर 4-5 मिनट तो 5 मिनट में स्टार्ट करते क्लास राइट
I think जिनको आना था सारे आ चुके हैं. Got the confirmation from Karan. So last class में हम लोगों ने क्या किया था? If you can help me with the topic. नहीं बताओगे? Okay, skill very good. Thank you. Yes. So the last of thing which I specifically want to cover in this session is joins, right? Remember that the data which I have shared with you or we have used previously, हम लोगों ने data पहले भी use किया हुआ है, right? We will use it again to understand different joins. So people who are from Jaipur, right? अच्छा आप पाइथन सॉरी चैट तो आप साथ ही बोल रहे हो ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. सो ओपन दिस डेटा, आपके पास होगा ये. Right, so let me run this. So I have created this data which contains two columns. One is for code and another one is for sales. And the second column has the description and the code and the name as well, right? Now, in SQL, we can simply create a Cartesian join by writing select sales dot star means sales data से सारे के सारे कॉलम, कॉमा DESC1 डेटा से सारे के सारे कॉलम फ्रॉम sales1 कॉमा DSC1. When you run this code, you will get a Cartesian product, which means every code will have a corresponding join with every code in the right table. So C865 का A536 B73 C865 K014 K086 M315 M163 blah 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 सबके साथ join लगेगा. इजी पीजी. सो लिखने का तरीका यही है, सेलेक्ट कीवर्ड रहेगा एंड सेलेक्ट और फ्रॉम के बीच में आपको सारे कॉलम लेके आने हैं एंड द कॉलम शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट? किस टेबल से कौन सा कॉलम आएगा ये हम उस टेबल के नाम से उसको रेफर कर सकते हैं. Now let's talk about the inner join. So how we write a join in SQL? The syntax is select again the column which you want. So sales dot star means all the column from sales table, comma DESC1 dot DESC means description one table से description वाला column. So here I am asking only specific column for my second table from sales and inner join on. Now inner join क्या होगा, आप सबको पता है join? Anyone who doesn't know about this inner join?
हेलो, कोई है जिसको इनर जॉइन नहीं पता अभी इस बैच में? सबको पता है? ओके। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? कितना डेटा पॉइंट आएगा या कितनी रोज का डेटा आएगा? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द चैट बॉक्स. So how many rows of data I will get in inner join? डेटा सबको याद है. सो कॉमन, सो जहां पे भी ऑन सेल्स वुड बी इक्वल टू डिस्क्रिप्शन वन कोड. कोड कहां पे इनर जॉइन? जहां पे भी ये बात, यस, द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द टेबल. एंड यू आर राइट अनुज, दैट इज 6. So these two columns my left table and this belongs to my right table, right? Belongs to my. Okay. Now full join. Okay, let me explain the full join and how the syntax I have written. Is it for everyone? Is it for everyone? Okay. Give me a minute. Drop on the ground.
All right, please now confirm. Am I audible? Perfect. All right, so full join. So let me first explain the syntax. So select A dot star. Now from what is this A? Sir, hello. Yes. Sir, Yes. एक मिनट. I just wanted to ask one thing, sir. जो from के बाद आपने table mention करा, that becomes the left table, and जो inner join के बाद mention करते हैं वो right table बन जाता है. Right. That Right. is So, yes, understanding. so my first table is left table, and the other table is my right table. Okay, sir. Right, sir. Now full join A dot star. Now this A is coming from where? So it is an alias name given to this particular table. And how I can give the alias? Just writing that particular key or the alias name after the table name. Comma B dot star. It is again the alias name for my second table. And on A dot code is equal to B dot my code and run. So every time whenever you are explaining your variable, right? Or you are right. Okay, I think my connection got lost, so I need to run these tables again. Oh. So now this is the full year. So I will get 8 rows, right? This will also give me this data. This also give me this data. Whenever it is finding a common match, it will get it like this. Sir, इसमें data को पहले से sort करना पड़ता है या no need? So good part about SQL is that we don't require to sort our data. Okay.
All right. Now for left join, we have a keyword left join. This will give me all the output from the left, all the keys from the left and the required data from the right. And most of the time we will be using left join or inner join. Right join, again we have a keyword right join, easy peasy. Now for any outer join, we don't have a specific keyword and we need to put a logic like where b dot my code is null. Which means wherever the my code is null, I don't want this data. If you look at this table, so this b dot, so my code should not be null, and it is null at this place, right? So this will give me the left outer join because only this place A206 is blank, or specifically b dot my code is null. This particular column is null at for A206. Any question before I move on to the next one? No, seems easy for everyone, right? So in this is equal to, you mentioned the common column. Yes, so is equal to represent on the key variable or the common variable on which you will be joining to table. Okay. Right. Sir. Okay. Sir. All right. And why we are writing this condition? So that we got a specific output which is left outer join in our case. Now what about right outer join? So proc SQL, again same thing. You can ask a specific column, you can all the column. Now here you need to write where a dot code is null. So you will got M31. Oh, oops, what went wrong? टेबल का नाम तो सही है. Why this is giving me an error? Again error. Let me check. Oops. So this should be my code. The name for this column is my code. So this is the output for my right table. Sorry, my right outer join. Okay, who can write me the code for full outer join? Answer please. On the similar line, you need to build a logic for full outer join.
Answer, please. Okay, you are trying. It's a different thing. Okay. You can do so. मिला कुछ आंसर? Sure. Do you need more time? Or should I show you the answer? Hello, people. Do you need more time? Or do you want the answer? Okay, good. What about others?
अच्छा, जो लिखा है वो तो बता दो, so I can guide you कि चलो सही सोच रहे हो या नहीं, या अच्छा क्या ट्राई किया वो तो बता दो एक बार। अनुज, मनीषा, बाकी लोग, आदित्य, निष्ठा, सलीम क्या ट्राई किया? सर मैंने ट्राई नहीं किया क्यों? सर। एक्चुअली मैं दोबारा करने वाला हूँ ये मॉड्यूल। अच्छा, छूट गया था स्टार्टिंग हाँ में? हाँ सर, छूट गया था, काफी मिस हो गया मेरा। ओके मैं सर आज आने वाला था क्लास में, बट लेट हो गया इसलिए नहीं आ पाया। मैंने बात की थी करण सर से। ओके मैं सर बस देख रहा हूँ, मतलब खाली अटेंड कर रहा हूँ, अभी से देख रहा हूँ बस। ओके। हाँ सर। बाकी निशिता, Hello, am I audible? yes, Yes, sir. Actually, I don't have the data, but from what you, the query you have asked, we can replace the full outer, sorry, the right outer join with the full outer join. Is that the query? I don't have the data, so I cannot okay. verify it. Yeah. I can share the data. That's not a big deal. I just अनुज और मनीषा, कुछ सफलता मिली आप लोगों को? सर
is not null में तो वो थोड़ा दिक्कत आ रहा है, मींस ब्लू नहीं हो रहा था। बेसिकली ए नॉट नल होना चाहिए एंड बी नॉट नल होना चाहिए अगर फुल जॉइन में लगाएं तो, कंडीशन लगा के मैं ऐसा सोच रहा था। वैसे ही कुछ लगेगा सोच कर, हाँ जी सर, सॉरी सर। वैसे ही कुछ कंडीशन लगेगा ना, कंडीशन का तो काम है पूरा। हाँ जी सर, वही कर रहा था, आई एम जस्ट ट्राइंग। एक वो एक्चुअली डेटा अब मैंने कॉपी पेस्ट किया है, अब मैं एक बार ट्राई करूँ सर, ट्राई करके आपको बता। ओके so now you have the data with you. So निशिता फुल ज्वाइन की जगह पे आउटर ज्वाइन करके तो कुछ तो है नहीं मेरे पास। Sir, So yeah. sorry, sir. You're saying something. Sorry. So मैं ये बोल रहा था there is nothing like outer keyword, right? And that's the reason कि हम लोगों ने जब लेफ्ट आउटर लगाया था, फुल Uh-huh. ज्वाइन लगाने के बाद वो मैंने आंसर पूरा दिखा दिया। So जब मैंने Okay. लेफ्ट ज्वाइन के बाद I कंडीशन got your लिखी थी point इसमें, राइट? actually. हाँ हाँ, मैं जो SQL में मतलब use कर रहे हैं तो उसमें full outer join का ऑप्शन होता है, इसलिए MySQL में, so that is राइट, why. MySQL में होता है। So this is the code, right? So where A code is null or B dot my code is null. अनुज इतना ओके सही था ओके बस। ओके। आप लोग एंड लगा रहे हो यहाँ पे, राइट? मैं सर नॉट नल सोच रहा था, नॉट। ओके, वैसे भी हो सकता है, बट उसमें क्या आएगा फिर? ए कोड इज, नॉट नल हो तो सारा कुछ चल जाएगा ना। हाँ राइट राइट, वो एक थोड़ा सोच रहा था, उस तरीके से सोच रहा था। So this is our joins, right? Give me a second. Any question on any of the join before I move on to the next topic? Okay, no question. So let me start the next topic. All right, so the next topic is macro. So what do you understand by macro?
Any experience with macro? नाम तो काफी बार सुना होगा, ऑफिस में काम करते हुए मैक्रो. ओके. Very good. So people who have worked on Excel, they might know this term macro, right? But in SAS, it is little different, right? For whatever work, whatever experience you have with macro, right? So macro is programming of your program, right? Yes, it is basically writing a program for your program, or sometimes also known as meta programming. So let me open that. All right, in SAS, macro has, in SAS, you will find, so there are two things which we can do with the help of macro. One is known as macro variable creation or macro variables. Second is macro programming. तो SAS में अगर मैं मैक्रो वर्ड जब भी यूज करता हूँ उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ पूरे मैक्रो वर्ड को. दैट इज, वन इज योर मैक्रो वेरिएबल्स, अपने वेरिएबल्स को ऑटोमेट करना. सेकंड, अपने पूरे प्रोग्राम को ऑटोमेट करना. राइट. सो आई विल फर्स्ट टॉक अबाउट द मैक्रो वेरिएबल्स in SAS, right? Okay, so let me quickly show you an example. So there are two things. So one is defining a macro variable and calling a macro variable. Similarly, defining a macro program and calling a macro program. All right. So when we say that defining a macro program, there are three different methods to define a macro variable. There are three different methods by which we can define a macro variable. So the first and easiest or most simple way is by using a simple keyword which is %let, followed by the name of the variable, then followed by an equal to symbol which is an assignment operator, and the value which you want to assign. So मैंने क्या किया, %let कीवर्ड से एक xyz नाम का मैक्रो वेरिएबल बनाया. उस वेरिएबल के अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर किया जिसका नाम है m. ठीक है. सो दिस इज डेफिनेशन पार्ट. नाउ यू कैन आस्क मी सर ये कौन सी बड़ी बात है, तो मैं कहीं पे किसी प्रोग्राम में डिफाइन कर सकता हूं. बट रिमेंबर, दिस इज नॉट इनसाइड एनी प्रोग्राम, दिस इज आउटसाइड एनी प्रोग्राम. Right? So whenever you are defining it, then you need to call it somewhere. ऐसे थोड़ा मैं डिफाइन करके रह जाऊंगा. I might be calling this. To call a macro variable, we use a keyword which is, or how we call a macro variable. So to call a macro variable, we put a dollar symbol before that macro variable name, and then followed by the, you see it is prompting you that this is your macro variable.
So now after percent put x $xyz, so percent put help me to call this variable. Now whenever you call this variable, right, the output of that variable would be displayed in your log window. तो अभी आउटपुट इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऊपर वाला कोड रन नहीं किया, वो क्रिएट ही नहीं हुआ था. So the output will be displayed in your log. So this is, we have defined it. Now by percent put %, xyz, we are calling this and it is resolving this as m. यहां तक बात समझ में आई everyone? All right. Now how we can use this? So I'm just showing you one simple example of using this particular. So for example, जैसे कि हम सबके मैनेजर होते हैं, एक ही काम को बार बार घुमा घुमा करके पूछते रहते हैं, तो मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कभी मेरे को बोलो कि वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल का डेटा दे दो, और कभी बोलते हैं फीमेल का डेटा दे दो. अब क्या होता है कि बार बार जब भी आते हैं तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, अपना आउटपुट ऐसे जनरेट कर देता हूँ. फिर थोड़ी देर बाद, नहीं यार एक काम कर, मेरे को मेल का नहीं फीमेल का डेटा चाहिए था. अच्छा जी, मैंने प्रोग्राम में चेंज किया एंड आई कैन गिव हिम आउटपुट. फिर ऐसा मेल नहीं, मेल चाहिए. सो बार अपने जो डेवलप्ड प्रोग्राम है उसके अंदर चेंजेस ना करने पड़े, राइट, वी क्रिएट मैक्रो वेरिएबल्स. अभी तो छोटा सा प्रोग्राम है, एक जगह चेंजेस कर रहे हैं, बट व्हाट इफ वी हैव अ 10 पेज कोड और वहां पे कम से कम 6 बार आपने यूज किया उसको, then it's a tedious task and it is prone to error, right? In order to avoid the situation, हम क्या करेंगे, we will replace this place with our macro variable, right? Now, if I want to change anything, I need not to touch my program. I will simply make a change over here, right? When I will run my program, now my output would be for female, right? So I'm not going to change my program, or I'm not going to touch my program once it is developed. Now the best practice is, so first you define a macro variable and create your normal program, right? Your normal SAS program, and then replace the value with the macro variable wherever you see a change in a program. So for example, in the second example, I'm creating a program for two different changes which is required, which is age. My age should be greater than this, right? And gender should be equal to this. So how I will write my program first? I will first write my program like this, where age is greater than, let's say, 12 and gender is equal to female, right? And close. Now, how to convert this program into a macro, or how you can use macro variable in this program? तो पहले अपने प्रोग्राम का आउटपुट देख लिया, अपने को यही चाहिए, वेरी गुड. अब इसके अंदर चेंज करना है तो कैसे करूंगा, जहां पे भी ये वेरिएबल वैल्यू है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा
मैक्रो वेरिएबल्स है ए बी सी, राइट। यहाँ पे एफ लिखा हुआ उसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, एम्परसेंड डीईएफ। Once to submit this program and run your program, so this is the first method of defining a macro variable and calling a macro variable. Any question on this? सर सर हमें यहाँ पे भी वेरिएबल एफ असाइन कर रखा है, वहाँ पे हमें अपना मैक्रो वेरिएबल रिप्लेस करना पड़ेगा, तो सर उसमें बेनिफिट क्या होगा सर? मतलब ये तो मल्टीपल जगह रिप्लेस करना पड़ेगा ना, अगर मल्टीपल बड़ा प्रोग्राम है तो। हाँ तो वो फिर एक ही बार का चेंज है ना मेरे लिए। ओके, एक बार चेंज कर, लेकिन रिक्वायरमेंट तो मैं यहीं से फुलफिल करूंगा। अब मान लो किसी बोल के 12 साल, ठीक है जी, ये लो जी, डन। सॉरी, हो गई 12 साल वालों को। अब इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा। मेल ये लो जी, मेल। प्रोग्राम को आप टच नहीं कर रहे विष्णु, प्रोग्राम इज have more integrity in terms of any risk of manual intervention. सर है अगर थोड़ा है, एक और थोड़ा है, अभी भी है थोड़ा, बट दिस इज बेसिक मेथड। सर अभी मैं एक और चीज पूछना चाहता था, इफ दिस